Hello, friends. Yesterday, we have started English literature and we have looked after unit number first, that is about uh, a letter to God. Unit number one, the another section is about the poetry. Poetry number one, that is Dust of Snow. It was written by Robert Frost. First, we introduce them. Robert Frost was a nature lover poet. We have learned many poetry of him in standard 8, 9. For example, I give you the example about the road not taken. So, generally, his poetry is based on the forest, roses, and yani the natural thing or the natural elements. So the same thing is prescribed in a very precious way and very interesting way, the dust of snow. Just we look at the two extract. आपको ऐसा लगता होगा भाई ये टू एक्सट्रैक्ट है, लेकिन in this two extract he has defined the nature in his so interestingly and beautiful way that he gave an interesting message to us, important message to us, that will change our way of vision, the way of that we are looking towards the nature. So let's discuss about it very briefly. In Dust of Snow, इस पोएट्री में पोएट के साथ एक हादसा होता है. One incident which changed his mood in a moment. In a moment he changed his mood. Actually वो नेगेटिव मूड में एक हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक नाम का ट्री है, उनके नीचे हुए बैठे हुए. हेमलॉक ट्री का मतलब हम निकालेंगे अगर तो हेमलॉक ट्री इज अ वेरी पॉइजनस. वाइट फ्लावर्स होते हैं, इट कंटेन्स वाइट फ्लावर्स एंड इट इज वेरी वेरी पॉइजनस. अब देखो नेचर की लीला भी देखो आप, नेचर कैसा है कि द चॉइस ऑफ दिस ट्री इन दिस पोएम इट signifies नेगेटिव इफेक्ट. वे हम लोग ट्री है, कौन उसके नीचे बैठना चाहेगा जनरली, लेकिन पोएट को ये दिखाना है कि हाउ नेचर गिव अस एन इंपॉर्टेंट मैसेज थ्रू इवन अ पॉइजनस ट्री ऑल्सो. तो एक दिन क्या होता है, क्रॉ जिसे हम जनरली हमारी जो बिलीव होती है ये कि पॉइजनस ट्री है, ऊपर से क्रॉ आता है, वो ऊपर बैठता है. बट यहाँ पर क्रॉ को हम क्या मानते हैं कि जनरली वी बिलीव कि क्रॉ बैड ओमेन, राइट. पैरोट या फिर कबूतर आता है तो हम उससे शांति का दूत मानते हैं, लेकिन क्रॉ को नहीं मानते. वी डोंट बिलीव दैट क्रॉ इज अ गुड, वी कैन से good omen. We always believe that is a sign of bad things. But actually what happened, as crow came to that tree, at that time he perched the soft snow, perched on the that tree, hemlock tree, and the soft snow came on the poet. The soft snow came on the poet. So as the snow fall down on that poet feel the extreme joy कि बर्फ का जो थोड़ा सॉफ्ट पार्ट उनके ऊपर जो गिरता है, उससे उन्हें ऐसा लगता है वो he felt at that time very 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 pleasure moment. So even though the thing is what I mean to say and I want to explain you that
the hemlock tree are there, it is very poisonous, and the bad omen crow is on that. Yani here double bad things are there, but as per our belief. But poet Robert Frost linked it to the very positive part and say that भाई उन्हें कैसा जॉय आता है जब वो क्रो ही उसे उसका जो हैप्पी ही चेंज हिज मूड, वो नेगेटिव इफेक्ट में नेगेटिव मूड में बैठे थे, पॉजिटिव मूड उनका आ गया, प्लेजर उनको फील होने लगा with the help of crow at the under the tree of hemlock. So nature is not partial in his all aspects, even though the tree is hemlock, यानी the poisonous, we can say कि भाई crow आता है तो crow, ये सब नेचर नहीं बनाया है, हमें भी नेचर नहीं बनाया है. So even though nature is not partial in their way, so why we should be in our daily life, we are going to be partial in our daily way. So we should change. Therefore, poet messages us, poet concludes us through this poem that we should change our beliefs, we should change our vision towards looking the nature. We should be always grateful to the nature, and we should have to change our way of looking towards, and we should have to develop the way of reverence, यानी पूजनीय भाव से नेचर को देखना है. दिस इज व्हाट द पोएट रिमार्क्ड अस. सो इतना ही है इस पोएम में. 2 एक्सट्रैक्ट है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी लाइन्स देन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. बट उससे पहले क्या है कि भाई आपको भी उतना ही रिस्पॉन्ड मुझे देना है, मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू. सो वी विल डिस्कस very next day the figures of speech, which is very important for poetry. Up to this we are completing our poetry, the stop. The exercise that you should exercise, yani the question answer you should write in your text in your notebook of English literature. So wait for our next video for figures of speech. Till then, goodbye and take care.